दिख तो नहीं रहा है। ऑप्शन कहाँ पे आएगा? ऑप्शन यूट्यूब के चैनल पे लाइक, हाँ लिंक शेयर करना। यस, हाँ हाँ मेरे को है। हम्म, 9 हो गया तो स्टार्ट करते हैं ना। ओके ठीक। I guess now is time, so we should like start now. Just a minute. Yeah, so let's start the session. So, hello everyone. Myself your host Shoaib Shama, and let me a bit introduce myself to you all. So I'm here at DTU. I'm from DTU COE third year. I am a incoming product intern at Sprinkler, and I have participated in various like global hackathon and all, and I participated in one of the hackathon of Meta, and in which I got all India rank 1, and I got Asia Pacific rank 3 as well. And I have a good exposure of machine learning, and that's why I thought of giving you also a bit info about machine learning and all stuff. So today's topic was CNN. What is CNN? So before going and jumping into CNN, let's actually try to understand how actually images are seen, like how actually we see images. So actually the thing is the human eye has a virtual like cortex, and it's in our brain. So it's the region of our brain that receive and integrate the visual like informations from the retina. Like there are many neurons in the visual cortex, and that and all that neurons have like different receptor field. आसान लाइक शब्दों में कहा जाए तो जैसे जो हमारा ब्रेन होता है तो उसमें बहुत सारी होती है आपकी न्यूरॉन्स वगैरह। तो उन सब की व्यूइंग की फील्ड अलग होती है कि वो सब लाइक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से सेंस करते हैं। जैसे हाउ इमेज इज व्यूड, आई कैन एक्सप्लेन यू बाय दिस एग्जांपल। लाइक ये एक हाउस टाइप है जिसको हमारी आंखों ने देखा, तो our eyes have received this। तो हमने क्या कहते हैं देखा, कैसे हमने देखा रेटिना के थ्रू, एंड देन फिर वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन गई आपकी बैकवर्ड्स आपके विजुअल कॉर्टेक्स में, और आपके विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर ये
न्यूरॉन्स वगैरह होंगे, ये सारे जो है, एंड देन ये अलग अलग तरीके से उसको क्या कहते हैं लाइक रिसीव करते हैं। कुछ क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं इमेज उसको हॉरिजॉन्टल कैप्चर करते हैं, कुछ वर्टिकल करते हैं, कुछ स्लैंटिंग करते हैं, कुछ कर्व में करते हैं, और कुछ इन सब का मिक्स मोड करते हैं। And like this, the information gets stored in our brain, and this is how like we view the like all the images which we see. तो ये सेम चीज साइंटिस्ट को देखी। तो साइंटिस्ट को देखा कि हाँ हम ऐसे ही मशीन लाइक बना सकते हैं कि जैसे जिस जिस पैटर्न के थ्रू हम वर्क काम क्या कहते हैं देख रहे हैं, मशीन भी उस पैटर्न के थ्रू चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो वहां से चीज लाइक निकल के आई जिसे हम कहते थे CNN। तो CNN का जो कॉन्सेप्ट निकला वो कॉन्सेप्ट समझाया कि वो लाइक ऐसी है। तो CNN इज व्हाट लाइक कन्वोल्यूशनल न्यूरल network emerged from the study of the brain visual cortex, the theory which I explained just now. And they have been used in image recognition since 1980s. And in the CNN, neuron, the first convolutional layer are not connected to every single pixel in the input image. तो ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल लाइक नेटवर्क जो है, तो इससे पहले हम जानते हैं कि कॉन्वोल्यूशनल क्या है। तो एक्चुअली में जो कॉन्वोल्यूशन है ना, वो एक मैथमेटिकल लाइक ऑपरेशन है। जो उसकी फॉर्मल लाइक डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच इट्स लाइक a mathematical functional operation that slide one function over like another, and it measure the integral point wise multiplication. तो सिंपल वर्ड में कहा जाए कि like it is a third function which is built by two function which see that how one one function curve is changed due to another। मतलब ये दो फंक्शन को लाइक मिक्स करके एक तीसरा फंक्शन ऐसा मतलब बनाता है जो कि चेक करता है कि अगर वो दो फंक्शन चेंज हो रहे हैं तो इसका ग्राफ चेंज लाइक कैसे हो रहा है। अब मैं इसको जरा ढंग से समझाता हूँ आपको कि ये है क्या। सो लेट मी जंप इनटू this slide। So introduction I gave you that what is like CNN and all stuff। हाँ, तो लाइक क्या कहते हैं और एक चीज की कॉन्वोल्यूशनल पे थे हम। हाँ, तो इसकी एक्चुअली में जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाइक CNN आना ही पड़ा, इसके बिना काम क्यों नहीं लाइक क्या कहते पड़ रहा था। तो जो आपको बताओ कि लाइक इन नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क पर लाइक व्हाट वी डू इज कि मान लिया हमारे पास एक पिक्चर है, एंड इसकी मैं मान लेता हूँ 28x28 विथ की ये पिक्चर है, ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट जो हमारा जो क्या कहते हैं इनपुट लेयर है जो हम फीड करते हैं, तो उसमें जो हमें न्यूरॉन्स लाइक चाहिए होंगे वो 28x28 चाहिए होंगे। 28x28 क्यों लाइक चाहिए होंगे, क्योंकि लाइक इफ देयर इज अ इमेज, तो इमेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। तो ये ना पिक्सल्स का कलेक्शन है, तो ये लाइक 28x28 की ग्रिड में मतलब बटा होता है। तो ये हो गया आपके 28x28 के लेयर्स। फिर उसके बाद हमारे हिडन लेयर्स भी होते हैं। फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है नॉर्मल जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो लाइक क्या कहते हैं हिडन लेयर से पास होता है। देन हिडन लेयर से पास होने के बाद देन वो फाइनल आउटपुट लाइक लेयर में जाता है। जैसे इसमें हमारे पास 3 क्लास थी कि डॉग, बर्ड एंड कैट। सो इन तीन क्लास के अंदर वो क्लासिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये तो बात ऐसे होगी कि if the like image is like 28x28, but if the pixel of the image is like 1000x1000, तो आपका जो इनपुट लेयर है उसी को अगर आप लाइक आपने 1000x1000 किया तो 10⁶ लाइक 1 मिलियन अराउंड। तो 1 मिलियन आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो लाइक इतने में ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर आप जब क्या नाम है आगे जाएंगे इसको पुश करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली ना, उतना कंप्यूट नहीं कर पाएंगे आप। और कंप्यूट करा भी तो उसमें टाइम लग जाएगा बहुत। तो उसी के लिए फिर हमने यूज करा CNN। कि CNN में क्या होता है कि लाइक इनपुट एंड आउटपुट के बहुत सारे हिडन लाइक लेयर्स वगैरह होते हैं। तो उससे फिर हम लोग क्या कहते हैं काम, उससे फिर हमारा काम क्या कहते हैं बन जाता है आसान। तो CNN में क्या सीन है कि यहाँ पे लिखा भी होगा, यस इसमें लिखा है कि ईच न्यूरॉन इन द सेकेंड कॉन्वोल्यूशन लेयर इज कनेक्टेड टू ओनली न्यूरॉन लोकेटेड विद अ स्मॉल रेक्टेंगल इन द फर्स्ट लेयर। ये इस डायग्राम को बता रहा है।
सो एक्चुअली में इसमें है क्या कि ये रही हमारी इनपुट इमेज और ये दो आपको लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में होता है कि अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं और वो सिर्फ कुछ टाइप की रिसेप्टर फील्ड पे वर्क करते हैं। तो सिमिलरली केस केस क्या कहते हैं यहाँ पे भी है, हमारी यहाँ पे लेयर्स वगैरह होती है और वो भी कुछ ही टाइप के और क्या कहते हैं, उसपे भी लाइक न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। वो सिर्फ अपनी जो उनकी रिसेप्टर फील्ड है वो सिर्फ उसी पे वर्क करते हैं। जैसे आप इसमें क्या कहते हैं देख सकते हैं कि जो कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 है, so it's responding to only its receptor field only, and like this neuron also is responding to its receptor field only. And in convolution layer 2, this neuron is responding to its uh, receptor field only. So इससे फायदा क्या होता है कि this architecture allow network to concentrate on small levels, and this small um, mix up, and then जो larger फीचर होता है ये स्मॉल स्मॉल वाले वैसे एक्सट्रैक्ट करके उसको लार्जर फीचर की तरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से चलता है। बाकी कुछ नॉर्मल टर्म्स होते हैं कि पैडिंग एंड स्ट्राइड। तो पैडिंग से पहले स्ट्राइड का देखते हैं। तो जैसे ये हमारी इमेज हो गई, ये पिक्सल वाली, और दिस इज एवरी रिसेप्टर फील्ड जो रेड में दिखाई दे रहा है ये भी एक रिसेप्टर फील्ड है। और फिर जो आपको ग्रे में दिखाई दे रहा है ये भी एक रिसेप्टर फील्ड है। तो स्ट्राइड क्या है कि जब एक रिसेप्टर फील्ड से आप दूसरे रिसेप्टर फील्ड में जा रहे हो तो कितने का जंप ले रहे हो। तो जैसे इसमें जंप जंप क्या कहते हैं 1 का है, तो स्ट्राइड इसकी होगी 1। और पैडिंग का सीन ये है कि जो आपने रिसेप्टर फील्ड का फिल्टर ले दिया है। ये सब आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, वी विल जंप इनटू द कोड सो थिंग्स विल गेट क्लियर फ्रॉम दैट। सो ये जो रिसेप्टर फील्ड का जो आपने ये लिया हुआ है कर्नल, जैसे यहाँ पे 3x3 का है, मतलब मान लिए कि जो जो यहाँ पे हमने इसकी रिसेप्टर फील्ड में प्रोजेक्ट किया है वो 3x3 का नहीं, वो 2x2 का हो। जैसे यहाँ पे ऐसा है भी कि जो रेड वाले ने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो जो हमारा वाला जो हमारी इनपुट इमेज है वो 2x2 का ही है। तो जो उसके बाकी की जो है ना ब्लैंक स्पेस, वी फिल दैट विद 0। so this we call zero padding. We can do one padding also, and other padding also, but वो नहीं करते हैं। वो कुछ कुछ स्टेजेस में करते हैं, उसकी लेटर स्टेज है ना। so let's jump into that. Then why should we use CNN? तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि you know that each image वही वाला कि 28 को क्रॉस 28 वाला है, उसमें आपको 784 चाहिए, and then if 1000 क्रॉस 1000 वाला आएगा तो then you need 10 की power 6. That's not na cost effective. And stride and waiting to stride denote how many steps we are moving in each convolution. By default it's 1. So stride को ऐसे भी हम लोग वो बोल सकते हैं कि the shift from one receptor field to next is called stride. तो इसमें अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो फीचर मैप है यही है कि जो इसका फीचर मैप होता है ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये क्या कहते हैं एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि कोई फंक्शन आपका एफ है और कोई फंक्शन आपका जीएक्स है, और क्या कहते हैं एफ ऑफ जीएक्स से आप एक नया क्या कहते हैं फंक्शन में आ रहे हैं। तो वो जो एफ ऑफ जीएक्स से जो नया फंक्शन आया, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद पैडिंग का आई जस्ट टोल्ड यू दैट ना इफ योर feature map is bigger than the input image, so we can do padding from 0 and all that stuff na. So things can be done. So actually ये feature map feature map extract होता कैसे? तो होता ऐसे है कि जो भी हमारा इनपुट फील्ड होता है, ये जो आपको नंबर्स मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो एवरी इमेज हैज पिक्सल, और हर पिक्सल का जो नंबर होता है वो 0 से 255 के बीच में होता है। ये उसकी RGB की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ
आपकी वैल्यू से क्या कहते हैं दिया आता है, तो हम लोग उसको अपने फिल्टर से क्या कहते हैं इंटू करते हैं। तो फिल्टर का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हम क्या कहते हैं मान लेते हैं, फर्स्ट आपका कॉलम, सेकंड कॉलम आपका जीरो लेते हैं, और थर्ड क्या नाम है कॉलम आपका -1 लेते हैं। एंड देन इससे जो नया मैट्रिक्स कैलकुलेट, ये होता है आपका फीचर मैट्रिक्स। तो जो जो हमारी लाइक 1000 क्रॉस 1000 की डायमेंशन थी, वो यहाँ पे यू कैन सी लाइक इट गेट reduced to 3 क्रॉस 3, और लाइक एनी सॉर्ट ऑफ फिल्टर विच यू टेक, लाइक यू टेक 5 क्रॉस 5, तो वो वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। This is something CNN is like useful for. And then we also use these ReLU layers. So ReLU stand for the rectified linear unit. So once like feature map is extracted, the main thing is to send that feature map to the like ReLU layer. So what ReLU does is ReLU perform an element wise operation and set the all negative pixel to 0 to introduce non-linearity to the network and generate output as a rectified feature map. So you have just seen now that we have like multiply this one with this one. So it's possible that our matrix like value is like -9 -8, but in real the RGB like value is from 0 to 255. So हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो वी नीड टू रिमूव दैट नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू रिमूव लाइक करने के लिए इस्तेमाल होता है रीलू आपका। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा बहुत अच्छा सा कि ये आपका इनपुट है, इससे आपने फीचर मैप बनाया। फीचर मैप के बाद जब आपने रीलू लगाया इसमें, तो ये आपका इनपुट था, और फिर इसके बाद ये आपका रेक्टिफाइड हो गया फीचर मैप। सो इट्स मोर लाइक ना क्लोज टू दैट ओरिजिनल वन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कूलिंग लेयर। कूलिंग लेयर में क्या होता है कि व्हेन वी आर डन विद आवर फीचर मैप, व्हेन वी आर डन, व्हेन वी हैव like applied the Relo sort of thing, the thing is to convert like the rectified feature map into the pool like feature map। उसको छोटा करने के लिए एक लाइक मतलब तरीके से कहा जाए तो कूलिंग इज अ डाउन सैम्पलिंग ऑपरेशन दैट reduce the dimensionality of the feature map, कि उसका डायमेंशन जो है वो और क्या कहते हैं कम करने के लिए। यू लाइक ये क्या कहते हैं छोटे में तो लाइक समझ में नहीं आएगा, बट द व्हेन ना योर डाटा इज लाइक 1000 क्रॉस like 1000, then it's very useful. So the rectified feature map now goes through a pooling layer to get pooled by a feature map। अब जो pooling होती है वो भी बहुत टाइप की होती है। एक होती है आपकी मैक्स पूलिंग, और एक होती है आपकी लाइक एवरेज पूलिंग। तो मैक्स पूलिंग में क्या होता है कि जो भी आपका फीचर मैप है उसमें जो मैक्स होता है, जैसे 1 1 3 4 2 है, इसका मैक्स 4 है, तो वी हैव पुट 4 here। यहाँ यहाँ पे 1 4 2 2 6 है, और इसका जो मैक्स है तो वी हैव पुट 6 here। सिमिलरली 8 आया आपका, सिमिलरली आपको 7 आया। तो कूलिंग का भी यहाँ पे लाइक एग्जांपल दिया होगा कि कूलिंग लेयर यूज वेरियस फिल्टर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ इमेज लाइक एज, कॉर्नर, बॉडी, आईज, फेदर। सो कूलिंग के बाद ना यू कैन सी लाइक थिंग्स हैव सॉर्ट चेंज लाइक गुड वन। कि थोड़ा थोड़ा जो क्या कहते हैं एजेस वाला सीन है, कि जो क्या कहते हैं उसका एज, जो उसकी चोंच का एज है, एवरी फेदर एंड इट्स बॉडी लाइन। सो ये सब आइडेंटिफाई हो जाता है इससे। Second type of pooling is your average pooling। So average pooling is taking the like average of all like every here। Hmm. That's then a fully connected layer, and let's see now. In code, we will see all that stuff. So how CNN recognize an image? So इसका सीधा यही है कि पहले आपका convolution layer लगाया, then we applied ReLU, then we applied max pooling। मैक्स पूलिंग के बाद जो आपका क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क था, वी लाइक अप्लाइड दैट, एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। सो व्हाई वी डिड दिस ना, लाइक व्हेन वी डू feature attraction or work like got some like somewhat like easier stuff, and we also get much more accurate result than that, because we you know that how much computation it would require if we use that or simple neural network sort of thing।
And first of all, it is cost like effective, and second thing is it's not that much accurate. So we'll see it कि ये accurate कैसे होता है और क्यों नहीं होता है. So I've written some code here. Import TensorFlow STF. These are like the basic codes. And import TensorFlow.keras. These are the standard library. You can easily check on YouTube like how to install that stuff and all. And matplotlib. This is used to plot the things, and numpy is used for like your mathematical operations and all. So we are using here CFAR 10 like dataset, and if I uh, see what is CFAR 10, let me show you CFAR 10 dataset. ऐसा होता है CFAR 10 dataset ना, it has like 10, I guess it says 10 random images of airplane, mobile, bird, cat, deer. So ये इसी के लिए होता है, and it consists of 6,000 images, which is 32 cross 32 like color image. Okay. And in training sample, there are 5,000 image and 1,000 test image. So let's see that is it true. So let's check extrain dot shape now. Extrain dot shape. So let us check. Yes, 5,000, 32 cross 32, and 3 is the like RGB count. कि उसकी लाइक इसमें चैनल्स कितने हैं, तो चैनल जो बताता है ये है इसका. We have not worry about so much. X test का let's see X test shape. What the shape of X test? So it's 1,000 cross 32. So no, 5,000 plus 1,000 6,000. So it's correct. Yes. So let's see the wide train. So wide train dot shape is 5,000 cross 1. So let's once check also wide train, how wide train looks like now. Wide train, and let's only have the first 5 entries. So if you see now wide train, so it is a 2D array. So like actually what wide train should be like ना 1D array, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो सिफार 10 का डेटा सेट है उसमें ऐसा है कि एक्स ट्रेन जो हमने ट्रेन करा, और वाई में जो उसका क्लासिफिकेशन टाइप है, तो जैसे कि लाइक ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मैं वाई ऑफ 0 लिखूं, अगर मैं वाई ट्रेन ट्रेन ऑफ 0 लिखूं तो क्लास आपका वो जाना चाहिए फर्स्ट. वाई ट्रेन ऑफ 1 लिखूं तो क्लास आपका ये क्या कहते हैं फर्स्ट आ जाना चाहिए, सेकंड वाले में 2 आ जाना चाहिए. ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं क्योंकि 2 डे अरे है. So we need to reshape it. Like, let me show you first. कि मतलब ऐसा वाला सीन है कि क्लासेस जो हैं एक्चुअली ऐसी हैं. क्लासेस जो हैं आपकी इट्स समथिंग लाइक दिस कि पहले में फर्स्ट योर लाइक एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट. एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, then deer, dog, frog, horse. Deer, a dog, frog, a deer, dog, frog, or horse, sheep, and truck. Horse, sheep, and truck. So I guess these are the 10 PRUCK. These are the 10. So if I will say in a class of 0, like CLASSE, class of 1, if I will write, so it will show me. Let me slider. It's not working. Yeah,
it is shown here like automobile. So we require such sort of stuff. So that's why we need to reshape our y. So to reshape our y, na, we need to just change. If we use like numpy y train y train dot reshape, and we first is our 2D dimension, na, so we don't need to change it. Like first is our like simple dimension, so just put -1 there, and second is we need to change, so just put a blank there. Yes, so now let's check y train. Yeah, it's it's an array of d type unit. That's fine. So we need to uh, like change the y test also. Y test is equal to y test dot reshape -1, and we will left it empty. So that's our done. That is done. Okay. So let's see ना some images that हमने जो plot कराएगी वो सही में हुए है कि नहीं. So we will use the plt function, the plt dot image show, and let's do x text x train x train of 0. Just see. So now it's difficult to identify what's it. But 0 was, I guess, frog or frog. So it's like looking like a frog a bit. No? So let's improve it. Bit. It's like a plt dot x label. It's also a type of label. No? X label. So classes of index we can do CLA SSES. Classes of y train of 0. Yes. So let's see. LABEL. Sorry. LABEL. Sorry for spelling mistake. Yes. Yeah. So it was looking like frog, no? So it's frog only. So let's see some other stuff also, like plt dot im show. We are testing like so x train of like I will do it too, and let do plt dot x label label classes classes of y train of 2. Let's see what it shows. I don't know why it's not working here. Yes, now it's working. It's a truck, I guess. Yes, so it's like looking like a truck. So this is no, our like data and all stuff working like fine. So let's do something. Let's make a function of a function like stuff. Def plot sample. If we need to plot now, we'll plot like this only. Plot sample. We will give input as x. This is our main input. Then y, and then the index sort of thing. Huh? And here, like what we will do is we will plt dot figure size. It's like it's 30 cross 30 like sort of stuff. Na? So 15 is dimension, and like this would be, I guess, fine. And plt dot image show, and we have x and x of index which will pass, and plt dot label label SEL is classes of y index. Yes, so here now we can just I made a function like if you want on further, so you can just do this.
Okay, so let's. So what we have to do? Let's see our training data. Next train. Hmm. So here you will see now that the training values has the data in this like 198, 189, 173. So these all are in the range now from 1 to 255. So what we need to do is we need to normalize this because like our RGB has the value now of from 1 to 2 like 55. So what we need to do is we need to normalize this all and we need to put this in a value between 1 to 2 like between 0 to 1 because we can't work on random figures like of 1 to 2 55 one we need to like work on a stipulated one. So for that what we will do is we will divide it by 255. So x train is equal to this is a feature of numpy. But if I will do like this now, so all its value will get divided by 125. So let me show you this. Yes, now all the values are from like 0 to 1 only. So let's first now build simple model which we were doing like before. So first we will do that build simple model and check accuracy. Okay, so I will build an like like ENN and MODL models dot sequential. Okay, and in that sequential model, I will have layers, pattern layer, input shape. We need to give it give in like input like input shape was our 32 cross 32, 32 cross 32, and channel was 3. Yes. So I will now let me add dense layers, some dense layer. Dense layer. Let me put it 3000 and activation function. I think you know the activation function. It's you used to like forward feed our data in our neural network. So activation function I will take here is reloop layer dot it's layers I guess. Yes, it will be layers now. Let's put it 1000 only this time. And activation is your relu only, RELU, RELU only. And LAYERS players dot dense. And last would be 10 because we have only 10 now. Activation is equal to relu. Why it's showing error? Models dot sequential input shape. Oh, input shape is equal to no. Yeah, now it's fine. Now it will be fine. Where is that stuff? Yes. Uh, Statement must be separated by new lines. Okay. Yes, yes. It's a part of sequential model, huh? Sorry. Yes. It's a part of sequential model, and obviously now this they will be found us. I guess it's closed now. Yes, this should work fine. Yes.
So now ann dot compile, we need to compile, and we use optimizer. Optimizer, let's use any optimizer, gradient descent. Stochastic gradient descent, let me use it. And then for stochastic, then we have to use loss function. So in the loss function, categorical, let's use a sparse categorical cross entropy, and and matrix we need to say is like your accuracy. So ACCURACY. Okay. So NN dot fit, NN dot fit, X train, Y train, and let run in like epoch of 5. Okay. Okay. Layers dot dense. Don't know why it's showing wrong. I like input shape 32. Layers dot dense activation and reload. Okay, 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 yes. Like it's one after one after one. No? Now I guess it should be fine. Yes. Yes, now it should run. Why it's not going? Hmm. F FLATTE. Okay. Mhm. Then also it's wrong. Epoch, what's running wrong here? And then don't fit X train, Y train, and epoch is 5. Why it's coming wrong here? Sparse, I think spelling is SPAR. What is spelling sparse? SPARSECATEGORICALCROSSENTROPY. Now I think there was a spelling mistake here again. Now it should work, I guess, fine. Again, it's not working fine. ACCURACY. Uh, Unknown loss function. I guess spelling is not correct. Let me check the spelling. Control C and Control V. Yes, spelling was not correct. So let us now see that how it's coming. So accuracy is increasing our bit by bit. Let's see how much final accuracy. So our accuracy is like about 9%.
So it's too low till now. So let's wait. It'll run again. It runs fully. So let's see the metrics and all that stuff. Till then it's running. Well, let's write some code for looking up for its metrics and all stuff. So from sklearn dot metrics import confusion metrics classification of code classification, and we imported y it's running. I guess how much it has run. So we remove it. Then I do that model models dot eqvntil, and then it's running. Let's without CNN model. Yes. So what will be in a CNN model? But we just see na from here. From here, CNN is that first we have need to add convolutional layer. So let's add convolutional layer here. We layers dot convolutional 2D layer. Okay. So we have to add filters now. So filters, let add 32 filter. 32 feature it will extract. Kernel size, KRNEL, kernel size. Let's take kernel size to be 3 cross 3. You can take of any like size, but I 3 cross 3 is like the preferred one. And activation function, activa, activa, activation function, you can just add relu. And input shape, like input shape was your 32, 32 and 3. Yes, 32, 32 and 3. This was your input shape. Okay. Input shape is equal to this. Layer, what's happened here? Layers dot we have to add max tool. Max
pooling, and this is also 2D. Max pooling 2D and max pooling 2D. Let's do pooling in 2 cross 2 only. Na? That would be fine. I guess that would be good. Then let's add one more. Should we add one more? Okay, let's add one more convolution layer to just show you. This is how we can add. We can add like any number of convolution layer and then do max pooling. Just for starting, we are doing only the two one. So convolutional 2D filter filter. This time I take filter 64. Internal size I will take same only. Internal size I will take same only. That's of 3, 3. And activation function I will call like activation your relu input shape. Like we don't need to give input shape here. You can give input shape, but like once you have provided now your like input shape, so it automatically looks for that. In a layer in like lower also where you will use the normal model, you don't need to provide like if you can provide that's good, but you don't need to provide max pooling 2D of 2 cross 2. Okay. And after that, simple your layers of flatten, flatten, flatten. So we don't need to give anything because we are applying. Just I apply this only. Layers dot dense. So again, I will give. Let's give number 64 only. 64 activation and activation again applying reloop and like last layer dense last layer we need 10 and ACTI, VATI activation. This time let use softmax. So these are softmax. These are like different type. You can use any of them. So this time I'm using softmax one. Did we get like our inputs from? So it was this fourth epoch is running still. Let it run. Then we'll see how much like accuracy we got from this and how much we got from this only. This one. So okay, let's write code in another that cnn dot compile compile. Huh. So compile we need to optimizer optimize it. I will use Adam here. Can use any and loss function. Same as yours. Like there are two like loss function. I will just give you an intro. So loss function is the amount of in information you are losing from your data. So here I've used sparse categorical cross entropy. I've used parsed here because the data which we have. So we have like data form like this type that here like there are 10 sparse thing and in which we are using that one thing. So that's why we have used like sparse categorical one here. So if like things would be like in X train and Y train sort of things like in an array, so then like we can use that categorical thing. Like there is like a small different sort of thing. Like if there is some continuous sort of data, and then you have like divided into different category or so. So then you use categorical one. If you have data which is already divided, so at that time you use sparse categorical like data है ना? So
So you can see the accuracy, how low accuracy is. It's still running, but you can see it's like nothing. Accuracy is nothing in this. And now just see when we use CNN, how accuracy and how speed like the things increase. Why it's showing error? I don't know. Yeah, accuracy just see it's nothing. Accuracy is like literally zero. Let's run this. Activation is equal to soft max layers. It's layers. That's funny. Okay. Layers dot then why it's showing wrong? I am not able to understand. Layers dot dense activation. Activation. No, I have not done any calculation mistake or stuff. Also, no. Okay, this is the mistake, na? RELU, RELU, and another mistake. Layers dot filter activation kernel size KRNEL SIZE 3 3 FILTERS filters. Yes, yes. Now it's fine. Yes, we are heading towards the last thing, last sort of thing. Yes, loss version is your sparse categorical one. So let me copy this time again. Otherwise, there would be spelling mistake. Now again, there will come sparse loss entropy and matrix. Again, I will take the accuracy one only. Accuracy. Yes. Let me run it. Yes. Now let's see what's happened. Like if we will train like this. CNN dot fit X train Y train and epoch like I will take epoch I will take in a batch of 10. So this will just show us this. Yeah, it's running. Just see in first only or just see or like accuracy in the first one only. So in our first epoch only we get like accuracy around 40, I guess. So this is some huge number. Na? Let's see how much it ends. So first, like epoch fetched us 46% accuracy. Second is about like 58. Na? Just see how it like affected our model and stuff, na? And how the accuracy like jumped from like it was like no around 20%, and now we are getting around 60% in our second epoch, and similarly would be. We'll see how much it increases further.
Loss has also, I guess, significantly decreased. Let's see how much loss we are having it here. Here the thing is decreased. So yeah, just it will take much time. So you can see now in fourth like epoch only the accuracy has jumped to around 70%, and in like eighth and ninth, it would be around like 85, around 85 to 91. So this is the all the stuff, and this is why like CNN is more preferred over ANN. ANN just do things now computationally, but what CNN does is CNN extract the feature stuff, and after like extracting the feature, it apply a filter, and after applying filter, it's like it pass through an activation function like Relu or software type of stuff. Then after softmates, it's passed through pooling. So pooling just extract the feature out of it and reduce its dimension, and that max pooling there. Then it's passed to our normal neural network, and then our accuracy is the same. So this was all from my side. So it like I will share this notebook in the link below in the description sort of things when it will run, and it will like completely over. So that's all from my side. Like I hope you had a great session. So thanks a lot. Shivam and Vivek, like you can stop the sharing.